Hi, good afternoon, everyone. So, today we are going to discuss the most important sections to be covered for IBPS SO means law officer exam, which is going to be held on 30th of January. So, let's begin the lecture. I'm Unnati Srivastava and I have done my master's in law from NLU Delhi in 2020. So, before we begin the session, like and share the session and also press the bell icon and subscribe to the channel. ऑल्सो आप अन अकेडमी के साथ जुड़ के कर सकते हैं अपने सारे स्टेट जुडिशरी एग्जाम्स की प्रेपरेशन एंड ऑल्सो वी विल बी ब्रिंगिंग यू मोर सेशंस ऑफ ऑन सेबी ग्रेड ए लॉ officer exam and also in IBPS SO on the platform as well as on YouTube, so you can stay connected for that as well. And if you're subscribing to something, you can use the code Unnati Live. Also, we have Judiciary Iconic, in which you get one-on-one live mentorship and you get live doubt solving, mains focus test series, and all the benefits of Plus in Judiciary Iconic. So you have to use the same code for both. If you subscribe to anything, either you subscribe to Judiciary Iconic or you subscribe to Judiciary Plus. So you can use this code, and these are the batches that are available. And मेरी special classes होती हैं 6 p.m. at 11 at 11 a.m. पे on the platform. So you can watch these classes on the platform at these times. And इसमें हम classes करते हैं constitutional law, IPC, CRPC, Indian Evidence Act की. ऑल्सो आपको इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. वहां से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है लेट्स क्रैक लॉ यूए जुडिशरी. So you can join the Telegram channel. The Telegram channel is for sharing all the important information regarding the exams, and also आप अपने doubts मुझसे पूछ सकते हैं उस चैनल में कभी भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो. ऑल्सो लिंक मेरी प्रोफाइल का भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो वहाँ से आप जाके मेरी प्रोफाइल भी अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, दिस इज द एक्सेलरेट 1.0 एंड चैलेंजेस सीरीज, जो भी आप अटेंड कर सकते हैं और आपको करनी चाहिए, बिकॉज अब बहुत सारे प्रीलिम्स भी लाइंड अप होने वाले हैं. सो दिस विल बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड दिस इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. इफ यू वांट टू सब्सक्राइब यू कैन यूज द कोड उन्नति लाइव एंड दिस इज द सब्सक्रिप्शन प्राइसिंग दैट इज अवेलेबल. मेरा यूट्यूब पे जो स्केड्यूल है वो है मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे का. सो ये हमारे सेशंस होते हैं. इनफैक्ट जो हम सेशंस कर रहे थे मास्टर डिफरेंस, तो उसमें हमने सीपीसी लास्ट टॉपिक किया है, उसके 2 सेशंस हमने यहाँ पे किए थे. आज उसका 6 बजे शाम को प्लेटफॉर्म पे उसका पार्ट 3 है, जिसमें हम लोग बाकी चीज़ों को डिस्कस करेंगे. वो 1 आवर का सेशन होगा. उसका लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा एंड आप वो भी 6 बजे लाइव देख सकते हैं. एंड यू कैन ऑल्सो ब्रिंग योर डाउट्स इन दैट. सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. लेट्स हम लोग क्या करने वाले हैं आज. आई हैव ऑब्वियसली, मैंने जो पिछला सेशन हमारा हुआ था उसमें मैंने आपको बहुत सारे बताए थे कि ये लॉज हैं जो आपको पढ़ने होंगे, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे. आज हम लोग उन्हीं लॉज के इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स सेक्शंस को देखेंगे. सो लेट्स बिगिन विथ the subject of the Insolvency and Bankruptcy Code. राइट. सो इसमें हम लोग को ये 2016 का एक्ट है. इसमें आई एम टेलिंग यू कि आपको क्या क्या इम्पोर्टेंट होगा पढ़ना. और इनफैक्ट ये जो कोड है, ये जो एक्ट है, ये इम्पोर्टेंट होगी फ्रॉम बोथ IBPS SO एज वेल एज फ्रॉम दी सेबी पर्सपेक्टिव. सो इस लॉ को मत छोड़िएगा. अगर आप दोनों एग्जाम्स को अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये लॉ आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा. सेबी में इसका जो आपको सेबी में इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 ही आता है. एंड what is nice about this is that आपको इसमें पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अगर आप इस एग्जाम के लिए भी करते हैं तो ठीक होगा. दैट वुड बी इनफ. एंड इन फैक्ट आई एम गोइंग टू टेल यू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन. सो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 इफ यू लुक एट इट, इट्स नॉट वेरी ह्यूज. तो पार्ट 1 तो बस 1 2 3 है आपके पास. पार्ट 2 जहाँ पे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पोर्शन आना शुरू होता है वो आता है. सो लेट्स जस्ट लुक एट कि आपको पार्ट 2 में से क्या क्या चीजें करनी होंगी. एक तो यू विल ऑब्वियसली डू योर पार्ट 1 इन विच
देयर शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, जो आपका सेक्शन 1 होता है, सेक्शन 1 देखना ही है, सेक्शन 2 में एप्लीकेशन है और सेक्शन 3 में डेफिनेशन है। तो डेफिनेशंस भी मैं आपको बताती हूँ आपको कौन सी करनी होंगी इसमें। सो आप 1 2 4 आई जस्ट राइट इट डाउन। तो 3 जो डेफिनेशन सेक्शन है उसमें आपको करना होगा 1 2 4 5, then you should do 8, then you should do 10, 11, 14 and 16 and 19, 20, 21, 23, 27, 30, 31. This what you should do in the definition clause and 35, right? उसके बाद सेक्शन, जब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं और सेक्शंस को देखते हैं, सो सेक्शंस में यू विल डू 4, देन यू हैव टू डू 5 एंड 5 इज अगेन डेफिनेशंस ओनली। तो उसमें कुछ ही डेफिनेशंस आपको करनी है, जिसमें है आपका 5 में आपको करनी होगी 1, then you'll have to do 4, then you have to do 5, then you'll have to do 7 and you can do 20, right? And इसके बाद you have to do, I'm telling you the sections that you'll have to cover. इसमें 25, 26 and 27 इसको कवर करिएगा 5 सेक्शन 5 में। Then section 6 you will have to cover section 6, section 7, ये इनफैक्ट पूरा इंपॉर्टेंट है। 6, 7, 8, 9, 10 you'll have to do 10 as well. उसके बाद 11, 12, 13, 12 पूरा ये पूरा ही है, मैंने जहाँ से शुरू किया है इसे। सेक्शन 4 से लेके आपको करना होगा सेक्शन ठीक है 4 से 32 you'll have to do and then you'll also have to do 33, क्योंकि लिक्विडेशन प्रोसेस वहां से शुरू होता है, तो 33, 33 to 54 you'll have to do 33 to 54. So basically you'll have to do पूरा ही 1 to 77, ये आपको पूरा ही करना है। इसमें से ऑब्वियसली कुछ सेक्शंस हैं जो जैसे पनिशमेंट्स में यू कैन, जो एंड के सेक्शंस आते हैं वो पनिशमेंट के हैं, बट यू कैन सी कि आपको उसमें कैसे करना होगा। देन लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो बेसिकली ये पूरा पोर्शन है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा आईबीसी में से 1 to 77. Okay, 1 to 77 is important. When we look at the Companies Act, let's look at the Companies Act 2013. So of course chapter 1, you अब इसको I will divide in the form of 3 sections: most important sections, then important sections and not so important sections. ठीक है, इसके अलावा अकॉर्डिंग टू मी आपको कोई भी और चीज करने की जरूरत नहीं है इन Companies Act. Okay, so I am first, let's look at the most important sections, which is section 31, section 41, 43, 47, 52, 54, 68, 71, 13 and 14. These are the most important sections. Now let's look at the important sections. 3, 4, 5, 8, 25, 32, 33, 44, 46, 53, 55 and 56, 62, 66, 123, 128, 135, 143, 152, 154, 165,
166, 177, 149, 103 and 124. These are the important sections in Companies Act. And also let's look at the not so important sections, which is 241, 242, 232, 213, 196, 202, 203, 205, 173, 174 and 169. So these are the only sections that you need to cover when it comes to Companies Act. So इतना ही कर लीजिए, that would be enough, but ये अच्छे से करके जाना है, that would be important. Okay, then if we look at the Consumer Protection Act, which is also something very important, so let's look at Consumer Protection Act. Okay, let's look at Consumer Protection Act 2019. आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में से क्या क्या पढ़ना होगा ये मैं आपको बताने वाली हूँ. सो देखिए, एक्चुअली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का ना चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, बिकॉज चैप्टर 2 कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स की बात करता है और चैप्टर 3 बात करता है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की. सो ये पूरा ही बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके बाद आपका है CDRC, which is also important, but there are certain sections which I would want to tell you कि CDRC में क्या important है, which is your chapter 4, right, which talks about CDRC. So I can just let you mark that 28, 34, 41, 42, 47, 50, 52, 54 and 55, 58 and 69. That is what you need to do in chapter 4. Chapter 3 is obviously mostly a quick reading of कि क्या है, लेकिन हाँ अगर आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आता नहीं है सो इट वुड बी इम्पोर्टेंट कि आप इन चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ें और एक बार एटलीस्ट यू नीड टू मेक अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज थिंग्स, राइट. सो बट येस, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड चैप्टर 4 में से इंपॉर्टेंट है, और यू नीड नॉट डू एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द अदर एक्ट्स विच इज योर सेबी एक्ट. SCRA करते हैं पहले. Okay, let's look at the SCRA Act. Now SCRA अगर आप देखोगे तो एक तो बहुत छोटी सी एक्ट है, इट इज नॉट वेरी बिग, ठीक है. इसमें है आपके पास टोटल 32 सेक्शंस ही हैं. सो मैं आपको थोड़ा सा इसका डिटेल में बताती हूँ कि आपको क्या करना होगा. सो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट सिक्योरिटीज, कॉन्ट्रैक्ट्स, रेगुलेशन एक्ट 1956, राइट. सो इसमें आपको ऑफ कोर्स सेक्शन 1 तो पढ़ना ही है. सेक्शन 1 आप पढ़ोगे. सेक्शन 2 में रीड टू ए, रीड टू ए, रीड टू AB, देन गो एंड रीड F, H. ओके, that's it. That's what you'll have to do when it comes. And also read I. Okay, definitions. ये definitions हैं आपकी. Also read J. J also comes in exam sometimes. Okay, तो ये आपने पढ़ लिया. ये this is your definition section. उसके बाद what you have to do is you have to read properly 3, 4. Read 4A as well. Read 4B. 5 आपको पढ़ना होगा. 6, 7, 8. 8, 9. I think इसको आपको पूरा ही पढ़ना चाहिए because there is nothing that you can leave it because it's a very small act. तो 32 ही sections हैं इसमें. जैसे I'm telling you आपको क्या नहीं पढ़ना है. So you can skip section 22A, you can skip section 22B, 22C, D, E, ये सारे आप छोड़ सकते हो. बट मतलब ये आप छोड़ो, ये 22C, 22D, 22E. Just leave these sections and but 22F करिए, ठीक है. You can leave 23 section, इसको मत करिए. These are to be left. These are the sections to be left. नहीं करने हैं ये sections. Okay, you can leave these sections. Leave section 23 as well. Okay, not so very important. Right? You can leave section 23JC. Okay, you can leave section 23K.
So do not do 23JC, do not do 23K. Okay, don't do 26D, don't do 26E, don't do 27. You can leave 27 as well. And you can leave 27A, 27B. छोड़ दीजिए इन sections को. Leave 30A. Leave 30A. ओके ऑलराइट. सो ये सेक्शंस हैं जो आपको नहीं करने हैं. तो इसके अलावा बाकी ये वाले छोड़ने, दीज आर द सेक्शन दैट यू नीड टू लीव. इसके अलावा ये तो करना है, ये तो मैंने आपको डेफिनेशन क्लॉज बताया है जो कि सेक्शन 2 है. सो ये आपको पूरा करना पड़ेगा. ये वाले आप छोड़ सकते हैं और इसके अलावा बाकी सारी चीजों को करिए इसमें. नाउ लेट्स मूव टू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. ओके, लेट्स मूव टू बैंकिंग रेगुलेशन Act 1949. Okay, let's move to Banking Regulation Act 1949. Now, again, when we look at Banking Regulation Act, it's not a it's a big act also, but इतनी भी कोई बहुत बड़ी नहीं है. So I'm just letting you know the important things that you need to do in the Banking Regulation Act. You have to read first of all. शुरू के सारे सेक्शन छोड़ सकते हो. सेक्शन 5 पढ़िए, उसमें पढ़िए B, उसमें पढ़िए C, उसमें पढ़िए D, उसमें पढ़िए F. ये है इंटरप्रिटेशन क्लॉज. ओके, देन यू कैन रीड JA, then you can read N. Okay, and then read section 6. Section 6 will be important. Section 7 will also be important. Section 8, section 9, section 10, this you have to do in these act. उसके बाद section 10B, you can leave section 10A, do section 10B, 10BB, you must do 10BB, you must do 11. Okay, then also do section 12. You must do section 12. All right, section 13, section 14A, section 15, section 16, 17, 18. बहुत important है इनफैक्ट 17 और 18. ओके, 19 जरूरी है. 19 का जो 19 क्लॉज 2 है वो बहुत ही important है. Okay, that will be extremely important. 19 clause 2. You have to do 20 as well. Then you do 21. Okay, and 21 is a very, very important section. Extremely important. Okay, then 21A. You can do 21A. 22, 24, 25, 29, 30, 31, which is extremely important. 31 is important. Then you have to do 36 AD, 36 AE, then do 37, 38, 39, 44A, 45, 46, 47A,
56. 56 is a huge section. Just read the, the marginal heading of it. Right. So that's it. That is what you need to do when it comes to Banking Regulation Act. Okay. So this is what you need to do when it comes to Banking Regulation Act. Now let's look at recovery of, and I've been sharing notes with you in the Telegram channel as well, so I think you can see that too. So recovery of debts due to banks and Financial Institutions Act, right, 1993. Okay, so let's look at this act, what all is important from here. So obviously section 1 has to be done. Okay, section 1 has to be done. Three, four, 5, 6, 7, 8, 9, 10, do 11 as well. 19, 20, 21, 30, 30A, that's it. That's all you need to do in recovery of debts due to banks and financial institutions act. Now let's look at PMLA. Okay, let's look at PMLA, which is your Prevention of Money Laundering Act. (2002). Okay, let's look at this act कि आपको इसमें से क्या-क्या करना होगा. PML is a pretty important act, and you don't have to do it completely, but I'll be telling you the sections that you'll have to do. So do section 2, and in 2 do E, then do H, do I, L, P. Okay, these will be important. Then do section WA, and WA is quite important. Okay, WA is quite important. Section 4 will be important. Section 5 is important. 6 is important. 8th is important. 11A, 12, 12A, 13, 19, 25, 26, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 62,
69, 69, 72. Yeah, these will be the most important sections for PMLA. Okay, these will be the most important sections for PMLA. This is what you need to do. Then let's look at RTI, Right to Information Act 2005. Pretty small act, ठीक है, छोटी सी act है. So you have to do section 2 and section 2 में do A, B, C, D, F, I, J, K, L, M, N. उसके बाद section 4, you have to do section 4, right? Section 5 has to be done, section 6 has to be done, 7 भी करिए, 8 is also be done. 9 and 10 pretty important. 11 is very important, third party information. 12 has to be done properly. 13 to 15, 16, 18 as well, 20, yes, 24, 24. Okay, so these are the sections that you need to do when it comes to the RTI Act. Okay, when it comes to the RTI Act, this is what you need to do. Let's also look at the RBI Act. Okay, let's look at the RBI Act कि आपको reserve RBI Act में क्या करना होगा, because RBI Act भी काफी important है. Alright. So let's start with section 2. Section 2, which is your definition clause. So BVA P1, okay. Then CCC E, you'll have to do. Section 3 is important. Then 6 is important. 8 is important. 13, 17, 20, 21, extremely important sections, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 29 to 33, 42, 45 IC you'll have to do. (45) ZB has to be done. 45 ZM has to be done.
Well, that's all in Reserve Bank of India Act. You'll have to do this much, and then also look at the Arbitration and Conciliation Act. So I would suggest that आप उसमें 1 to it would be nice that अगर आप 1 to 43 को properly कर ले. So and also do in fact I would say that do 1 to 43M, and then you can leave part 2 in it. Part 2 को छोड़ दीजिए. I'll just quickly tell you here. Arbitration Act 1 to 43M, and then do 61 to 81. Okay, that's it. This much you'll have to do in the Arbitration Act. So that's all from my side. If you like the session, please like and share the session before you leave. And also, if there are any queries with respect to IBPS SO, you can put it in the Telegram channel, and we can conduct more of such classes on the platform. So thank you so much, and have a